A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope that you all are well and hope all of you are doing well at your homes. आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने घरों में होंगे और अपनी स्टडी में मसरूफ़ होंगे. Dear students, today is 29th of April 2020 and we are going to learn a poem जिसका नाम है नेशन इज स्ट्रेंगर. दिस पोएम इज रिटन बाय राल्फ वाल्डो एमरसन. इस पोएम में राइटर एक कौम की ताकत और कमज़ोरियों की बात करता है. बिफोर स्टार्टिंग आवर पोएम वी विल लर्न अबाउट सम डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर रिटन ऑन द बोर्ड. फाउंडेशंस. Foundations means बुनियादें. Mighty means ताकतवर. Grand means बड़ा. Defy means मुकाबला करना. Foe means दुश्मन. Throng means भीड़. Rust means जंग. Decay means ज़वाल पजीर होना. Pride means गुरूर. A people means a nation, एक कौम. Dare means हिम्मत. Stand fast means डटे रहना. Now, dear students, let us study the poem Nation is Stronger. What makes a nation's pillars high and its foundations strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? Dear students, शायर ओपनिंग लाइन्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी सवाल करते हैं कि व्हाट मेक्स ए नेशन इज पिलर्स हाई, कि किसी कंट्री के प्रिंसिपल्स, किसी कंट्री के आइडियल्स ऊंचा कब होते हैं. यहाँ पिलर्स का मतलब है आइडियल्स, रूल्स. एंड इट इज फाउंडेशनल स्ट्रांग, और इस मुल्क की बुनियाद किन चीज़ों से मजबूत होती है. What makes it mighty to defy the foes that around it throng? जो दुश्मन उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, उनसे लड़ने के लिए इस कंट्री को ताकतवर कौन बनाता है, यानी किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए कंट्री को ताकत कौन देता है. Now, second sentence. It is not gold, its kingdom is grand, go down in battle shock. Its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. इन लाइन्स में शायर कहता है कि माल व दौलत किसी कंट्री को ताकत नहीं देता है. बड़ी बड़ी सल्तनतों की बुनियादें जंग की वजह से तबाह व बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उन हुकूमतों का जो बुनियाद है वो रेत पर लगा रहता है, मजबूत चट्टानों पर नहीं रखा होता है. यहाँ शायर का कहना है कि कोई भी कंट्री मजबूती के साथ खड़ा रहने के लिए उसके उसूल पक्के होने चाहिए. Now see third stanza. It is the sword, asked the red dust of empires passed away. The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. इस स्टेंजा में राइटर कहता है कि किसी कंट्री को ताकत दौलत दे सकती है क्या. उन गुजरी हुई सल्तनतों के खून से सने में लोगों से पूछो कि कहाँ गई उनकी सल्तनतें, कहाँ गया उनका गुरूर. जो लोगों को ख़त्म करके सल्तनतें खड़ा करता था, उनके खून की वजह से उन सल्तनतों के बुनियादों में जंग लग गई और वो बर्बाद हो गई, यानी वो ख़त्म हो गए. Now next stanza. And is it pride? Ah, that bright crown has seemed to nations sweet, but God has struck its luster down in ashes at his feet. इन लाइन्स में शायर कहता है कि कहाँ गई वो शान व शौकत और चमक व दमक वाली हुकूमतें जिस पर वो लोग फख्र करते थे, गुरूर करते थे.
لیکن خدا نے ان کے غرور کو چکنا چور کر دیا ہے، ان کے شان و شوکت کو راکھ میں تبدیل کر کے اپنے قدموں میں بچھا دیا ہے۔ Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffers long. ان لائنز میں شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی مال و دولت کسی بھی ملک کو مضبوط نہیں بنا سکتا، لیکن وہی لوگ کسی قوم کو سٹرانگ بنا سکتے ہیں جو عزت دار ہوتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ ہی اپنے قوم کو سٹرانگ بنا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے کوئی بھی قوم مضبوط رہ سکتی ہے جو ہمیشہ سچائی کے خاطر مضبوطی سے کھڑا رہتے ہیں اور ساری مصیبتیں برداشت کر سکتے ہیں۔ Now, last stanza. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillars deep and lift them to the sky. ان لائنز میں شاعر کہتا ہے کہ بہادر وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، جب بزدل لوگ سوتے رہتے ہیں، اور بہادر ہمت کرتے ہیں، اور وہی بہادر لوگ ملکوں کی بنیادوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ان کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس پوئم میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی نیشن دولت کی وجہ سے مضبوط نہیں بنتا، بلکہ اصولوں کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی محنت سے بنتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے کلاس میں اتنا ہی۔ کل ہم انشاءاللہ نیا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔